Good morning, children. So once again, we are meeting in a new revision lecture of lecture 9. Today, we will start a new chapter. That is called chapter number 8, Framing of Constitution and its Features. Now see, children, as you know, we have gone in detail during our process what is meant by constitution. In the initial video lectures, I have made you to write each and everything. The questions which are presented here is not just the questions, because all these questions, answers were also written on this board. I remember during the regular lectures. So once again, as you know all these things, we will revise all the concepts which is given in chapter number 8, क्योंकि ये सब हमने लिख के आपको समझाया है और अभी जो है वो वापस रिवीजन करेंगे. Now children, first of all, let us go for introduction. What is meant by constitution? As you know, every independent nation has its own rules and regulations. How to govern a country, how to make a country a welfare state, how to overcome the problems lying within the nation and on the frontiers of the nation, how to elect the representatives of the people. Because see, at present, maximum countries of the world are having a democratic setup of government, where people are given the choice to elect their representative. As you know, recently there are two sets of government prevailing at present in the world. We know what is meant by democracy, we know that. Since 5th standard we are studying, India is a democratic nation. But let me elaborate and say, there are two sets of democracy. There are two types of democracy prevailing in the world. One is presidential democracy. And second is parliamentary democracy. Acha, talking about India, we have our parliamentary system of democracy. And in parliament, you know, Prime Minister is the head of a nation. Though the rules, the government is run in the name of president according to constitution. But the real head of government is Prime Minister, because we are having parliamentary type of democracy. Now, coming back to the topic that is called constitution. Constitution is such a document which is prepared, taking into consideration all the things which is necessary for a healthy democracy to sustain. And each and every country have its own constitution, different constitutions. Right? Now, talking about India is a country of vast geographical diversities, regional diversities, number of social structures, cultures, values, traditions, all these things lies in India. It is not from today or from 50 years or 100 years, but this thing is almost in existence since last 5,000 years. Because time to time you are studying history, starting from Aryans, last British, in that gap of 5,000 years, number of foreign tribes came to India, they settled, they brought their culture,
They mingled with Indian culture. The new spring of culture was turned up. And everything was sustained by India. So, when it was a time of independence, India was a multi-regional religion culture. Now, how to satisfy? How to satisfy all these things? Because number of castes, trade, religion, customs, traditions, people live in India. In order to satisfy the aspirations of all these classes, our Indian constitution was framed in such a way that not a single class, not a single person thinks that he or she is indiscriminated. Understood? It is the legitimacy of our culture, of our constitution. Right? So, let us start with constitution, a basic document. Because see, this is a document on which we our government run. We know what is our rights, what are our duties, each and everything. It is our constitution. Understood? Let us see. What is meant by constitution? Textbook, page number 56. Understood? Textbook, page number 56. Now let us see. Any systematic collection of rules designed to govern a nation, its regime, is called constitution. The principles on which a nation runs, a nation is governed. It is called constitution. जिसको हम कायदा कानून बोलते हैं, जिसकी वजह से हमको आज़ादी का एहसास होता है, हमको कई सारी चीजें पर्याप्त होती हैं। समझ में? तो इसे कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अच्छा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक डॉक्यूमेंट. Constitution is called the basic document of our country because what happens, what takes place, or what is supposed to take place in our nation and our relations with other nations or foreign policy, which we say, each and everything is minutely described in Constitution, and according to that our nation works, our judicial system works, our law and order works. We have to follow that rules and regulations because as a citizen of India, we are abiding by our constitution. Right? So, constitution is a basic fundamental document of our country. Am I clear? It is the basic fundamental document of our nation. Let us see. Importance. The Constitution is the basic and most important document. You concentrate in your textbook. I am going line to line so that you can easily understand. My question lies over here. And all these things we have done past. So let us revise once again. Right? The laws of the country are based on the Constitution. No law, no person can be above the law of Constitution. कोई भी इंसान, कोई भी आदमी, चाहे कितना भी बड़ा हो, वो Constitution के परे नहीं है. Constitution के हेड को क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट बोलते हैं. प्रेसिडेंट को भी Constitution के कायदे कानून लागू होते हैं. वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं जा सकते, चाहे इंसान कितना शक्तिशाली हो, कितना पावरफुल हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही काम न कर सकते हैं अगर सब कुछ सही सलामत हुआ तो. Understood? The country's constitution
should be subject to relevant provisions. Relevant means connected provisions. All the provisions must be made in Constitution, in the document. कि भाई ये हुआ तो ये करने का, ऐसे हुआ तो ऐसे करने का, ऐसा नहीं करने का, ये काम करने का, वो नहीं करने का, ऐसे कुछ thousands and thousands of interpretations are there. Because every day we require all these interpretations. क्योंकि इतनी बड़ी आबादी वाले देश में, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत में है, अभी हमारी जनसंख्या 135 करोड़ तक पहुंच गई है। 135 करोड़ का देश में रोज कितनी घटनाएं होती है, तो वो घटनाओं को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलाना पड़ता है। और अफरा तफरी बन जाएगी, जंगल राज आ जाएगा। ऐसे समझ, the constitution is superior to all the laws of the nation, because जो भी कायदे कानून बनते हैं देश में वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही बनते हैं। उसके बाद हम कभी जा नहीं सकते। उसके बाद पार्लियामेंट में भी कोई कायदा, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, कोई भी रूलिंग पार्टी बना नहीं सकती। ऐसा समझ में, कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व्स पीरियडिकली चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। चेंजेस भी होते हैं, जो आज कायदा हमने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वो आज के मायने में सही है, आज के समय में सही है, लेकिन 10 साल के बाद हम उसको देखें तो हमको लगता है इसमें इतने लूपहोल्स है। अच्छा, ये तो अभी पूरा समय बदल गया है, सिस्टम बदल गया है, तो हम उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। ऐसा भी प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट? Such provision is made in the constitution, that is called amendment. Amendment એટલે change. और सबसे पहला हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तब जाके पहला चेंज 1976 में आया था, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तकरीबन 1949-50 में बना। तो उस वक्त वो जो कायदे कानून थे वो सही थे, लेकिन जब आते आते चलते चलते 76 तक हम पहुंचे तब मालूम पड़ा कि इसमें तो काफी बदलाव आ गए हैं, तो हमको बदलाव के हिसाब से चलना पड़ेगा। इसलिए कुछ ना कुछ तो बदलाव करना ही पड़ेगा, इसलिए कुछ बदलाव हुए थे। That is called amendment in Constitution. Constitution involves periodically changing requirements of the people's aspirations, ichai, expectations, interests, as well as emotions of the nation. हमारी भावनाएं जुड़ी है, हमारी आशाएं जुड़ी है, हमारा फ्यूचर जुड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन से। इसीलिए तो हम गवर्नमेंट से क्या क्या उम्मीदें लगा रहे हैं, ये करने का, वो करने का, ये करने का। कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि अगर हम चाहें तो हम अपने सपनों का भारत बना सकते हैं। सबसे बढ़िया देश बन सकता है, लेकिन अंदर से एक इच्छा शक्ति चाहिए, एक विल पावर चाहिए। ये जो पॉलिटिक्स खेलते हैं अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो राजनीति करते हैं, उसकी वजह से हमको ऐसा लगता है भारत में ये है। बच्चे लोग आप सुन लो, ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं ये इतना मार मरोड़ के कॉन्स्टिट्यूशन के कायदे कानून को अपनी फेवर में करना चाहते हैं। इसीलिए हमको संविधान से भरोसा टूट जाता है। ऐसा नहीं है, जो बोला गया है उसको वो लोग रॉन्गली इंटरप्रिटेट करते हैं अपने फायदे के लिए और सबको गुमराह करते हैं। कई सारी घटनाएं आप देखते हो रोज। That is the reason our constitution is called a basic document. ये हुआ हमारा पहला सवाल, why constitution is called a basic document. Now second सवाल, process of framing constitution. जब 1946 जून में आजादी की डेट तय हुई
ब्रिटिश सरकार ने बोला कि 30 जून 1948 के पहले हम हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएंगे। तब जाके हमारे पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी आई कि अगर इतना बड़ा देश है, हमको आजादी तो मिल जाएगी पॉलिटिकली, लेकिन ये देश को संभालेंगे कैसे, ये देश को चलाएंगे कैसे, कौन सी सरकार बिठाएंगे, कैसे कैसे इतने बड़े देश को लोगों की आशाएं परिआशाएं हम पूरी कर सकते हैं। तो इसीलिए एक कमेटी का गठन हुआ जिसको बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। Well versatile people of that time, knowledgeable people, intellectual people, and number of suggestions were taken from other people, from other side, outside. At the same time, constitutions of other nations were also studied in depth, so we can deliver the best. है समझ में? So that is my topic, process of framing a constitution. Before independence, the British government on 25th March underlined this date. क्योंकि जब मैंने लेसन चलाया था तो शायद आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं थी, अभी तो सबके पास टेक्स्ट बुक है, तो आप अंडरलाइन करो, पेन पेंसिल शुरू ही रखने का। Before independence, the British government on 25th March 1946 handed the duty to the cabinet mission to find of the 3 members to find the solution of the problem of Indian independence. 3 मेंबर की कैबिनेट कमेटी थी, उसको सौंप दिया ये दायित्व कार्य कि आप अभी अपने काम पे शुरू हो जाओ। अगर आजाद भारत हुआ तो आप वो भारत को कैसे चलाएंगे, कैसे गवर्न करेंगे, कौन सी सिस्टम की गवर्नमेंट आप रखने वाले हो। इतनी बड़ी जनसंख्या है, उस वक्त आजादी के वक्त हमारे भारत की जनसंख्या थी 36 करोड़ के आसपास, तो इतना बड़ा जो देश है उसको आप कैसे मैनेज करोगे। On the basis of recommendation of cabinet mission, the Constituent Assembly was constituted and the structure of constitution was decided. कैबिनेट मिशन ने सुझाव दिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का, गठन करने का, और उसके सुझाव के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का निर्माण हुआ और ये असेंबली अपने काम पे लग गई। तो कैसे हम सपनों का हिंदुस्तान बना सकते हैं, सपनों का भारत बना सकते हैं, समझ। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली comprised of 385 members. सब अंडरलाइन करना बेटा, 385 members in which various members of different religion, caste, gender and people of various geographical diversities. कोई आसाम का था, कोई गुजरात का था, कोई कश्मीर का था, कोई कन्याकुमारी का था, क्योंकि पूरा भारत है और ये भारत का संविधान बनाना चाहता था, तो सबको जगह तो मिलनी चाहिए, किसी को इग्नोर को नहीं कर सकते। भारत दुनिया की सबसे बड़ी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाला देश है, समझ में। सो political representatives, experts of various fields were included. जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, HP मोदी, HP कामत, फ्रैंक एंटनी, कन्हैयालाल मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर, बलदेव सिंह, and representatives called Sarojini Naidu and Vijayalakshmi Pandit were the members of framing of our constitution. They were the framers, the foundation members to frame our constitution. उस वक्त वो सब हमारे भाग्य विधाता थे। उन लोगों ने जो सोचा, उन लोगों ने जो किया, वो आने वाली पीढ़ियों पे बहुत गहरा असर छोड़ने वाला था।
कि अगर हमारे से चूक भी हुई, जरा सी भी चूक हुई, जरा सी भी गलती हुई सोचने में, लिखने में, फ्रेम करने में, तो इसकी सजा पूरे भारतवर्ष को चुकानी पड़ेगी। तो बात सोच लो कितना मैसिव प्रेशर उस पर रहा होगा, कितना थिंकिंग करना पड़ता होगा ताकि आने वाली नस्लें उसको कोई कोसे नहीं, उसको कभी ऐसा सवाल नहीं फेस करना पड़े कि भाई एक बंद कर, उसको कोई ऐसा सवाल नहीं फेस करना पड़े कि भाई आप कौन होते होते हमारे बारे में फैसला करने वाले, आप कौन होते? तो इसीलिए बहुत सोच समझ के, बहुत गहन पढ़ाई करके, बहुत थिंकिंग करके ये बात आगे बढ़ी, राइट? was a member of Constituent Assembly. Dr. Rajendra Prasad was the president of Constitution Assembly, and the committee was appointed to draft Constitution under the chairmanship of Dr. Bhimrao Ambedkar. Dr. Ambedkar हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। The Constitution Assembly met for 166 sessions, spread over 2 years, 11 months and 17 days. That means almost 3 years. 3 साल में तकरीबन 10-12 दिन कम रह शेष रह गए। 3 साल तक इन लोगों ने गहन अभ्यास किया, कई कानून लिखे, बनाए, बदले गए, एलिमिनेट किए गए, नए ऐड किए गए। ऐसा नहीं कि एक बार लिखने बैठे, पूरा आपकी होमवर्क की कर रही है, एक बार बैठे पूरा हो गया सब, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत कुछ लिखना पड़ा, बदलना पड़ा। 3 साल में काफी समय में बदल गया था, ऐसा नहीं। तो ये सब नजर में रखते हुए उन लोगों ने हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, जो उस वक्त और आने वाली पीढ़ियां तक जो उसको सही लगता था, ऐसा से members of the assembly has discussed thereby each and every detail and its provision keeping in concern the matters of constitution of different countries. They have studied the constitution of different nations. In this constitution, there were 295 articles. Articles means concepts, जिसे हम paragraph, lessons बोलते हैं, right? And 8 appendix, 8 subjects में, और वो subjects में 295 initially, फिर उसमें भी बदलाव हुआ है। After amendment, there were 395 articles and 9 appendix. मतलब ये बुक है, इसमें 9 चैप्टर है। 9 चैप्टर में आपको एक चैप्टर में 10 टॉपिक है, दूसरे चैप्टर में 15 टॉपिक है, ऐसे प्लस प्लस करके मान लो कि ये बुक में 10 चैप्टर है, तो उसमें टॉपिक की कंटेंट क्या हो जाएगी? मान लो 150 टॉपिक, तो इसको हम बोलते हैं 150 आर्टिकल्स और 9-10 क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। इसी तरह 9 अपेंडिक्स सिलेक्ट किया और 395 आर्टिकल्स सिलेक्ट किए, और आर्टिकल्स के भी सब आर्टिकल्स और उसके भी सब आर्टिकल्स और उसके भी सब आर्टिकल्स प्रिपेयर हुए। ऐसे The Constitution was framed on 26 November 1949 and the Constitution was unanimously passed in Constitutional Assembly. On 26 January 1950, Constitution of India came into existence and India was declared Republic Nation. भारत को गणतंत्र जाहिर किया गया, and that is why, as I told you a number of times, we have 2 national festivals. That is, the first is our Independence Day, that is 15th August, and second is our Republic Day, that is called 26th January 1950. Right? Thereafter, every year, 26th January was celebrated as our Republic Day with a national flavor, with enthusiasm.
Right? The Indian Constitution has 4 lions as national emblem. 4 शेर की मोर जो गुजरात में श्रीराम जयसी का प्रतीक था, उसको नेशनल एम्बलम रखा गया. Right? And national slogan Satyameva Jayate became our national slogan. Truth prevails, truth wins. The Constitution provides for citizenship, rights and duties of the people. ये हमारे हिसाब से पढ़ना है, इसीलिए हम इतना ही पढ़ते हैं. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब स्टेट कैसे चलाना है, सरकार जो लोग बनाते हैं, चुनते हैं, वो सरकार का दायित्व क्या है, वो सरकार कैसी होनी चाहिए, लोगों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता क्या है, सरकार की ड्यूटी क्या है, क्योंकि ये सरकार लोगों द्वारा बनाई गई सरकार है. आपको मालूम है, आपने पढ़ा है ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. तो ये जो सरकार बनाते हो, वो सरकार कैसी होनी चाहिए, लोगों के लिए वो सरकार क्या कर सकती है, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एलाबोरेट किया गया है. यूनियन स्टेट रिलेशन, मतलब सेंटर और स्टेट का रिलेशन, इलेक्शंस, इमरजेंसी एक्सेट्रा, thousands of things were introduced and elaborated in constitution. है समझ में? Now, this was my second topic, process of framing of constitution. Now we are shifting to third topic, what is preamble. तो आपकी पेज टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 57 पे, पेज 57, राइट, पेज 57 पे एक चार्ट दिया गया है, तो आप देख लो. पेज 57 पे आपको जो ग्राफिक दिया गया है, उसको हम प्रीएम्बल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्रीएम्बल. पेज नंबर 57 ऑफ योर टेक्स्ट, बिल्कुल ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है. वो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है, जैसे हर एक टेक्स्ट बुक का जैसे फर्स्ट पेज होता है, वो फर्स्ट पेज के बाद का जो अंदर का सेंट्रल आइडिया होता है, उसको हम प्रीएम्बल बोलते हैं. समझ में? ओके. My question: what is our constitution? Guru? What is preamble? Preamble is the core and important part of constitution. It is the most important part of constitution. Indian constitution begins with preamble. ऐसा समझ? The words written in preamble highlights the soul of our constitution, and that is why I have got you one new reason. कि constitution, preamble हमारी constitution की आत्मा है. जैसे हमको मालूम है, आत्मा के बिना शरीर का कोई अस्तित्व है ही नहीं. ठीक वैसे तरह अगर प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता, तो कॉन्स्टिट्यूशन का कतई कभी मीनिंग साफ नहीं होता. जब भी जरूरत पड़ती है तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को हम पढ़ नहीं सकते. इसीलिए प्रीएम्बल को पढ़ के उसके अनुसार, उसके अनुरूप हम अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं देश के. एंड दैट इज व्हाई preamble is the soul of our constitution. है समझ में? Let's see next. The preamble remained unchanged till 1976. बराबर है? Unchanged since 1976. In 1976, the words socialist, secular, unity and integrity of the nation was added in the preamble. Right? The preamble verbalized the fundamental objectives of the Constitution, aims and ideas of the Constitution. Right? Therefore, the preamble straight away creates the clear vision for welfare state
hence preamble reflects the constitution famous psychology. preamble से हमको अनुमान लगता है, preamble के द्वारा हमको मालूम पड़ता है कि उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन फेमस थे उसने कड़ी मेहनत की होगी, कितना हमारे बारे में सोचा, कितना कुछ कहा और जाके ये ऐसा एक हमारा एक भारत बना। बराबर है जयेश? So we are coming to next topic, that is called importance of preamble. The preamble is the soul of our constitution and it is also necessary document. Right? Preamble is the soul of our constitution. It is also very important document at the same time. Right? To understand the framing of any law or any interpretation. Interpretation मतलब understanding. क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतनी सारी घटनाएं होती रहती है रोज, तो रोज एक एक घटना को स्टडी करने के लिए हमको संविधान के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। बराबर है, हमको संविधान के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। और ये जो संविधान है उसके हिसाब से हम जो काम करते हैं उसमें कोई बाधाएं ना आए, कोई दिक्कत ना आए और सब कुछ स्मूथली हमारा ह्यूमन राइट्स, हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट ना हो, उसी समय हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज का भी ध्यान रखा जाए और देश में सुशासन बने। वो सब कुछ सोच के समझ के प्रीएम्बल को एनालाइज किया जाता है। आया समझ में? प्रीएम्बल गिव्स प्रॉपर गाइडेंस। हमको प्रीएम्बल में से सारा गाइडेंस मिलता है। Right? To understand the policy behind the framing of any law, preamble plays a very important role. Understood? Preamble plays a very important role in framing of our constitution. मैंने बोला रोज बरोज की जिंदगी में इतना बड़ा देश है, इतने बड़े स्टेट्स है, सब स्टेट्स को, सब देश को कई सारी घटनाएं का सामना करते हैं, रोज हजारों सवाल खड़े होते हैं। वो सवाल का सॉल्यूशन तो चाहिए ना, तो वो सारे सॉल्यूशन, वो सारे सवाल के जवाब हमको प्रीएम्बल में मिलते हैं। राइट? Preamble plays the important role. The preamble is very useful to avoid the trouble in the interpretation of constitution. अगर हमारे से कुछ गलतफहमी हुई है, अगर हमारे से कुछ गलती हुई है, तो हम प्रीएम्बल के द्वारा उसको सुधार सकते हैं, उसको संभाल सकते हैं। Right? Why? When there is any ambiguity, ambiguity means difference, or obscure, obscure means obstacle, details in law arise. कोई पेचीदा मामला खड़ा हो, कोई कठिनाई या दिक्कत आए, तो जो लॉ मेकर्स है, सुप्रीम कोर्ट के पैनल है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो प्रीएम्बल को स्टडी करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इसमें इसका क्या तोड़ है, निचोड़ है, और उसके हिसाब से वो न्याय करते हैं। हमारी न्यायपालिका सबसे बढ़िया है, आप देखते हो तो आप बाहर जितना भी शोर हो, जितना भी हल्ला गुल्ला हो, आक्षेप हो, लेकिन आप जब कोर्ट में देखो तो कोर्ट बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलेगी। एक एक चीज की वो प्रूफ मांगेगी, वो प्रूफ को एनालाइज करेगी, सही गलत का फैसला वो खुद लेगी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, और जाके
न्याय मिलता है, बराबर, तब जाके ये सब पॉसिबल होता है, राइट? Preamble helps in understanding and interpreting the laws. Thus, preamble serves as a compass to understand the provision of Constitution. इसीलिए preamble को Constitution का आत्मा बोला गया है, ऐसा समझ में? Preamble is national unity, integrity, and the standard crust. Crust मतलब उसका soul, मिट्टी नहीं, among citizens brotherhood, who are having noble sentiments and ideals. मतलब हमारा सपनों का भारत. Preamble is backed with very high goals and ideals. कई सारी हमारी आशाएं, इच्छाएं, सपने preamble में छिपे हैं. और अगर कॉन्स्टिट्यूशन preamble के हिसाब से बिल्कुल सही मायने में चले, तो हकीकत में भारत एक सबसे बड़ा देश, सबसे बढ़िया देश, बड़ा तो नहीं, बढ़िया देश बन सकता है. ओवरऑल तो ये हमारा 4 कॉन्सेप्ट का, जो मैंने एक एक वर्ड बिल्कुल साफ तरीके से आपको वापस समझाया. Over. So now it is your time to take your homework. Short note on framing of Constitution. Short note on framing of Constitution. Number 2. Why or for what is the importance of preamble? ये दूसरा क्वेश्चन है. What is the importance of preamble? तो हमने यहाँ तक सब कुछ रिवाइज किया वापस. In next lecture, we will study something detailed about the further part of our chapter number 8, that is called framing of our Constitution, right? Features and all these things. So we are ending this lecture, children. Meet you in the next lecture. Till then, goodbye. Take care.